Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. Embrace the iExamB learning experience with us. You can reach out to us in any queries relating to competitive examinations. We do provide you coaching through online courses. For that, you can check out all the demos of the courses in which you are interested by visiting our website www.iexamb.com. For queries, you can reach out to us by writing us an email on hello@iexamb.com or call us directly on the number 9205524028. आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. We have Legal Bee, which is the exclusive law channel of iExamB. On this, we keep on bringing before you videos which are very much relevant for those who are preparing for examinations after law, those who are pursuing law, academicians, lawyers, researchers, and especially those who are preparing for competitive examination. So ये सारे beneficial content के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें. Press the bell icon and do subscribe Legal Bee. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कंटेंट विच इज़ वेरी मच रेलिवेंट फॉर IBPS लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन. IBPS प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी भी आया है एंड काफ़ी सारे लोग क्वालिफाई हुए हैं. उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस. मेंस में आपका जो लॉ सिलेबस है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आज से मैंने सीरीज स्टार्ट की है एंड पहला सब्जेक्ट जो मैंने पिक किया है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. IBPS में डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी अच्छा वेटेज होता है. कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. आप इस PPT को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं. दिस कैन बी अ वेरी रेडी रेफरेंसर फॉर यू पीपल टू हैव द क्वेश्चंस विद यू. प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. इफ एनी क्वेरीज आर देयर टू रीच आउट. And why are we going through the important questions? How is it going to be helpful for you? Now it is a very crucial time for those who have qualified the prelims. They just have to do targeted study. They don't have that much time कि वो हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ सके. अब इसमें काफ़ी अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स के पहले ही लॉ की पढ़ाई भी कर रखी है, जिन्होंने कुछ परसेंटेज में पढ़ाई की है और जिन्होंने लॉ को हाथ नहीं लगाया, प्रीलिम्स पर ही फोकस किया. ये अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं. But all these people need to bring down themselves through the most important areas first. Because अभी जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है. आपको प्रायोरिटी से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. So when you are prioritizing your study, definitely you need to know the important areas and the important questions from each subject. Focus on it because ultimately आपको questions बहुत selected आने वाले हैं. Syllabus बहुत vast है and the number of questions is 60 only. So उसके हिसाब से आपको पढ़ाई भी उस direction में करनी ज़रूरी है. So for that you need to know which are the important areas, which are the important questions. So that I'm going to cover in this particular video. First question. Preamble to our Constitution proclaims that we, the people of India, have established sovereign socialist democratic republic, sovereign socialist secular democratic republic, sovereign secular democratic republic, sovereign socialist secular republic, sovereign socialist secular democratic. Which is the correct option out of it? Preamble एक बहुत ही important area है. भले क्वेश्चन इस इन टर्म से रिलेटेड हो बट प्रियम्बल से आप कोई भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. द स्टेटस ऑफ प्रियम्बल वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है. सो प्रियम्बल से रिलेटेड इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही पिक किया है ताकि आप ये ध्यान में रखें दैट व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल you have to do very properly. It is very important. The correct answer is sovereign, socialist, secular, democratic, republic. And here you may also keep in mind which terms have been added by way of amendment. Which was that amendment which has added these terms to the preamble? All these things will become relevant for you. इन क्वेश्चंस को बहुत पर्टिकुलरली मत लीजिए बट इन क्वेश्चंस के साथ साथ बाकी चीज़ें भी एनालाइज कीजिए कि और क्या क्या क्वेश्चंस इन एरियाज से बन सकते हैं. इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके हम कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं. सो लाइक दैट इफ़ यू just focus and you study from exam point of view in this way, definitely you will qualify the means as well. Restitutory powers of legislation rest with. Now this restitutory powers is an important area again. It rests with Parliament and state legislature.
Rajya Sabha and state legislature, Lok Sabha and state legislature, parliament and the president. So who is having the residuary powers of legislation? Now you can focus on this particular term and this can help you get the answer even if you don't know about it. कि legislation के residuary powers किसके पास होंगे? So the correct answer is parliament only. We have a specific article for that, article 248 of the constitution, जो बात करता है residuary powers of legislation की. So what are these residuary powers? जो directly कोई भी list में covered नहीं है, जो कोई topic 3 lists में covered नहीं है in the 7th schedule, उसके अलावा जो भी कुछ बच जाता है, that is known as the residuary. So the topics which are coming under this category, उस पर अगर law बनाना है, then that will be in the hands of the parliament. Parliament will have the exclusive power to make law with respect to that. Which body has the law-making power in respect of goods and service tax? Now GST से related law कौन बनाएगा? Question is very simple. Now prima facie हमारी नज़र GST Council पर ही जाएगी. But when we talk about law-making power in respect of goods and service tax, then who is going to have that power? Parliament and legislature of the state in consultation with GST Council. ये कब कहाँ पे कवर किया गया है? आर्टिकल 246A, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. यानी कि ये तीनों बॉडीज मिलकर काम करेंगे. एडवाइस देने का काम कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल. पर एक्चुअली लॉ मेकिंग बॉडी तो लेजिस्लेचर ही रहेगा. ये लॉजिक भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन रिमेंबर दैट इट इज डायरेक्टली कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन 246A, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स. We also have a Goods and Service Tax Council, as we have discussed, which will be recommending in making the laws. That is also covered in Article 279A. That also you can remember here. Which article of the Constitution guarantees right to property? Very easy question and a direct question. I am trying to take a mix and match of all the types of questions possibly which I can comprise in one particular video. Right to property. राइट टू प्रॉपर्टी का अभी का स्टेटस क्या है? पहले क्या स्टेटस था, अब क्या स्टेटस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. सो वी ऑल नो इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 19(1)(f) ओमिट हो चुका है. 300A जो स्टेटस देता है राइट टू प्रॉपर्टी को, फंडामेंटल नहीं है बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट. नाउ कमिंग टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर. What kind is this procedure? Procedure of amendment of the Constitution is rigid, flexible, easy and misused sometimes. So यहाँ पे options पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. But if you know the answer, you won't take much time to solve this question. The answer is E, neither rigid nor flexible. अगर हम procedure देखें तो procedure काफ़ी elaborate procedure है, lengthy है, so उसके वजह से वो flexible नहीं है. बट अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितने बार अमेंड कर दिया है? मोर देन 100 टाइम्स टिल डेट. सो हम ये नहीं कह सकते दैट इट इज़ सो डिफिकल्ट. सो इट इज़ समवेयर इन बिटवीन. अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन इज कैरीड आउट बाय. जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. So you can see bill introduced in either house of parliament, bill passed by total membership of each house, bill passed by 2/3 majority of members present and voting of each house. अब इनमें से क्या कंडीशन है? कोई एक कंडीशन है, दो कंडीशन है या तीनों ही कंडीशंस हैं? So the correct answer is all three together. That's why we say that the amendment to the constitution is a rigid one. The constitution is rigid one, but at the same time it is flexible as well. Which article of 368, which clause of article 368 mentions about its correlation with article 13? article 13 भी काफ़ी important है and ये दोनों correlated है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा. Which is the clause that is talking about it? clause number ऐसे जनरली आपको नहीं पूछा जाएगा, but ये दोनों प्रोविजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे मैंने यहाँ पे कवर किया है. एंड यू मे ऑल्सो एट द सेम टाइम बाय वाचिंग दिस वीडियो, दिस क्लॉज दिस विल कम इनटू योर नोटिस. सो ये आपको ध्यान में रह जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन आज देख लेते हैं विद द सोल्यूशन. करेक्ट आंसर इज थर्ड क्लॉज.
थर्ड क्लॉज देख लेते हैं क्या बोलता है ऑफ आर्टिकल 368. Nothing in Article 13 shall apply to any amendment that is made under this article. Who shall establish interstate council for water disputes? कौन establish करेगा interstate council water disputes के लिए specially? That is also a direct provision. Answer is A. President only is going to do that work. Article 263 talks about provisions with respect to an interstate council. If and any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a council, what are the duties that are also provided in Article 263 itself, वो आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ड्यूटीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. यूनियन टेरिटरी एज प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 8 शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय whom? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है कि यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर कौन करेगा. Though we say that the president is the one, but president is going to do that by making an appointment, and that is what is known as the appointment of an administrator. So the correct option here becomes president through administrator, covered under Article 239 of the Constitution, administration of union territories. President acting to such extent as he thinks fit through an administrator. Power of Parliament to legislate on matters in state list in national interest is provided under which article of the Constitution? ये काफ़ी ज़्यादा important है जो legislative powers of the Parliament है. State legislatures, 7th schedule, all the 3 lists and the important subjects. Especially जो Parliament के extravagant powers है जो prevail करेंगे कुछ particular situations में. For example, international relations, international agreements हैं. उसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगा सब्जेक्ट कोई भी लिस्ट में हो. सिमिलरली नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इमरजेंसी है, एनीथिंग लाइक दैट, पार्लियामेंट इज गोइंग टू लेजिस्लेट ऑन दैट मैटर इवन इफ इट इज इन द स्टेट लिस्ट. सो विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इट? आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कंसेप्ट ऑफ DPS fees is borrowed from Germany, Australia, Ireland, USA, Canada. Very easy question. Ireland is the correct answer. Ireland also has itself borrowed it from the Spanish Constitution, but we have borrowed it from Ireland, so for us the correct answer will be Ireland only. ये भी एरिया आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. Under Article 12 of the Constitution of India, state includes Government and Parliament of India, Government and Parliament of India, and Government and Legislature of each of the states. Government, Parliament of Legislature, local other authorities within the territory of India or under the control of Government of India. Parliament of India and Legislature of each of the states, Parliament of India and Legislature of each of the states, and all local or other authorities within territory of India or under the control of Government of India. The correct option is very lengthy, but this is the one which is correct. ये directly Article 12 से लिया गया है. Very simple question. Reasonable restrictions on freedom to assemble can be imposed. Freedom to assemble पहले तो आपको correlate करना होगा कौन से article का part. Now already the answer is there on your screen by mistake, but the correct answer, as you can see, it is A only. Article कौन सा है? 19. 19 is talking about freedoms, and in the same article, clause 2 onwards, you are having all the reasonable restrictions. यानी कि 19(1) में जो भी फ्रीडम्स दिए हैं उनके 1 by 1 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्लॉज 2 ऑनवर्ड्स दिए हुए हैं. सो जब हम बात करते हैं 19 की तो 19(3) की हम बात करते हैं, दैट इज टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन ऑफ लॉ में अगर हम कोई फ्रीडम है जैसे कि फ्रीडम टू असेंबल दैट इज स्पेसिफिकली आज ईयर, तो उस पर अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कब होगा? when it is on the grounds of interests of sovereignty and integrity of India or public order, जो directly यहाँ पे दिया हुआ है. DPSP is infringed. DPSP अगर वायलेट होता है तो उसके लिए क्या रेमेडी है? नो रेमेडी इन कोर्ट, कोर्ट में रेमेडी है. नो रेमेडी बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, रेमेडी इन पार्लियामेंट, रेमेडी इन कोर्ट ऑफ स्पेशल मैजिस्ट्रेट, नन ऑफ द अबव. वेरी सिंपल आंसर इट इज. इसको हमेशा फंडामेंटल राइट्स से इसलिए कंपेयर किया जाता है. DPSP is not enforceable, is not having any remedy in court of law as we have
for fundamental right violation, you can file a writ petition directly in the High Court and Supreme Court. But directive principle of state policy के लिए ऐसा नहीं है. Fundamental duties are enshrined in Part 4, Article 51, 5, 51, 451A, 4A 51, 4A 51A. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के हमें आर्टिकल्स या फिर पार्ट्स भी ध्यान में रखने चाहिए. आई वुड सजेस्ट दैट, स्पेशली बहुत लैंडमार्क एरियाज लाइक फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बहुत ही लैंडमार्क एरियाज, ये हम सबको याद होना ही चाहिए. करेक्ट आंसर इज E. यू कैन रेफर ऑल्सो दिस. फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कमिटी के ऊपर एस्टैब्लिश हुई है? स्वरण सिंह कमिटी. Which is the amendment which is relevant here? 42nd Amendment 1976. 86th Amendment 2002 में क्या हुआ? Fundamental duties were increased to 11 because education से related amendment आया था, तो एक fundamental duty भी add हुई थी. ये एरिया भी बहुत important है, सब कुछ in and around of this. As per Article 50 of the Constitution, state shall take steps to separate legislature from executive, judiciary from executive, judiciary from executive in public services of the state, judiciary from legislature, judiciary from legislature in public services of the state. We all know about separation of judiciary from executive. इतना हमें याद रहता है. बट क्या उस आर्टिकल में और भी कुछ है? So one line article, try to remember, henceforth don't forget this. Judiciary from executive in the public services of the state. ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया है आर्टिकल में, तो हम इतना पढ़ते हैं तो हम ये भी याद रखते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिवली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो. टर्म ऑफ प्रेसिडेंट एक्सपायर्स in 5 years from the date of entering in office, 4 years from the date of entering office, 5 years from the date of declaration of results, 5 years from the composition of a new Lok Sabha, till the lifetime. Answer is 5 years from the date of entering of office. Simple question था ये भी. Term of office of president, Article 56. President से related काफ़ी सारे questions important हो जाते हैं आपके लिए, so do it well. The oath is administered to the President of India by Chief Justice of India, Prime Minister, Chief Justice of High Court, Speaker of the Parliament, Vice President. So oath is administered to President of India by whom? ये oath appointments वाले questions आप expect कर सकते हैं Constitution of India से. अगर ऐसे कोई भी questions आते हैं, I would suggest you people to go through well. So the correct answer is Chief Justice of India. Article 60 covers this area. Oath or affirmation by the President. Every President and every person acting as a President or discharging the functions of the President shall, before entering upon office, make and subscribe in the presence of Chief Justice of India, or if suppose he is absent, senior most judge of the Supreme Court available. यहाँ पे Supreme Court senior most judge option नहीं है, so हमें उसको consider करने की ज़रूरत नहीं है इन options में. अगर वो भी दिया है और अगर बोथ ऑप्शन है तो बोथ ऑप्शन करेक्ट होगा. Any charge for impeachment of president may be preferred only in House of People, only in Council of States, only in joint session of Parliament, by the House of Parliament, by the Supreme Court. Impeachment of president भी काफ़ी important area है. That's why I've taken it up over here. Remember that. Remember the article number also if possible. Correct option is by the House of Parliament. अगर आप प्रोसीजर देखोगे तो वहाँ पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है that the charge shall be preferred by either House of Parliament. कोई भी हाउस impeachment of president के लिए चार्ज मूव कर सकता है एंड उसके ग्राउंड्स भी आगे दिए हुए हैं. So 61 is an important article for you. So today's last question. Total number of ministers including the Prime Minister in the Council of Ministers shall not exceed 10% of total members of House of People, exceed 15% of total members of House of People, exceed 10% of total number of members of the Parliament, exceed 15% of total number of members of the Parliament, exceed 15% of total number of members of the Council of States. Now in small changes have been made in these options. This is also famous question, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये प्रोविजन भी आप याद में रखें. करेक्ट ऑप्शन इज बी, exceed 15% of the total number of members of the House of People only. डायरेक्ट प्रोविजन है, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स में
Prime Minister shall be appointed by President, and the other ministers shall be appointed by President on the advice of Prime Minister. 1A is an amended provision of that which talks about this, that it shall not exceed 15% of the total number of members in the House of People. So this was all that I had to discuss with you all on the topic of Constitution. I've tried to cover a lot many topics in this set of 20 MCQs. कोई भी queries हो, do reach out to us. All the very best to everybody for your preparation. Prepare 50% faster with us at our exam.